Prime Minister and I have just finished a very productive meeting. And the Prime Minister, I know you've got to go up to Capitol Hill very soon and to address the joint session of Congress. It's a testament to the strong and enduring and thoroughly bipartisan support that exists all across the United States for the friendship and partnership between India and the United States that they're anxiously waiting to hear you up on Capitol Hill. A partnership that is among the most consequential in the world, that is stronger, closer, and more dynamic than any time in history. Mr. Prime Minister, we've met many times over the past few years, most recently in Hiroshima at the G7 summit, and each time I was struck by our ability to find new areas of cooperation. Together, we're unlocking a shared future of what I believe to be unlimited potential. And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. From designing new ways to diagnose and treat illnesses like cancer and diabetes, to collaborating on human spaceflight, including sending an Indian astronaut to the International Space Station in 2024, to accelerating the global clean energy transition and tackling the climate crisis we face, to harnessing our shared expertise on critical and emerging technologies like quantum computing and artificial intelligence, to ensuring they are not used as tools of misinformation and oppression. We are doubling down on our cooperation to secure our semiconductor supply chains, advancing Open RAN telecommunications networks, and growing our major defense partnership with more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. Our economic relationship is booming. Trade between our countries has almost doubled over the past decade to more than $191 billion, supporting tens of thousands of good jobs in both India and the United States. Add to that, 1 million American jobs across 44 states will be supported by the purchase of more than 200 American-made Boeing aircraft by that Air India is announcing earlier this year. And with this visit, Indian firms are announcing more than $2 billion in new investments in manufacturing, solar in Colorado, steel in Ohio, and optic fiber in South Carolina, and much more. Further proof that America's manufacturing is back. We're expanding educational exchanges for our students, building on the record 125,000 student visas for Indians to study in the United States we issued last year, and opening new consulates that's going to make it easier for our people to travel, work, and collaborate together. On the issues that matter most and that will define the future, our nations look to one another, including on critical regional and global issues. And today, we also talked about our shared efforts to mitigate the humanitarian tragedies unleashed by Russia's brutal war in Ukraine and to defend the core principles of the UN Charter's sovereignty and territorial integrity. We discussed our work through the Quad and how India and the United States, together with Australia and Japan, can ensure the vital Indo-Pacific region remains free, open, prosperous, and secure. Through our new I2U2 grouping with Israel and the UAE, we're building regional connections to the Middle East and spurring science-based solutions to global challenges like food security and clean energy. And this year, under India's leadership of the G20, we're putting sustainable development at the center of the agenda. We're delivering meaningful action on low and middle-income nations, including multilateral development bank reform, debt relief, and building resilient and equitable health systems. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. And let me close with this. Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family.
and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights, which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. India now is now the most populous country in the world. It's a democracy. We understand that it is the brilliance and the backbone of our people, as diverse and talents and traditions that make us strong as a nation. It's democracies that do that. We see that so clearly here in the United States, where a vibrant Indian American community of more than 4 million strong contributes every single day to the writing of the future of our nation. Indian Americans of every background and faith, representing the full diversity of India, are pursuing their American dream while maintaining deep connections for their Indian heritage and families. That makes us all stronger. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States. And that is why I know the friendship between our nations, is only going to grow as we face the future together. Mr. Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, राष्ट्रपति बाइडेन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बाइडेन को उनके मित्रतापूर्ण शब्दों और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में उनके सकारात्मक विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने
कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय